Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life. You know, it's been such a wonderful experience for me on a personal and professional level to be meeting such amazing and unique people and getting to know them better through this podcast series. And I'm sure that you people have been enjoying these conversations even more than we have had conducting them. Just a little reminder in case you haven't already subscribed to our YouTube, SoundCloud, and Spotify channels, please go ahead and subscribe to them so that you can stay tuned in to all the episodes and their notifications just in time. आज जिनसे मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, आज जिनको हम हॉट सीट पे लेके आए हैं, उनकी कहानी इसलिए मुनफरिद है क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी जगह आके वो बहुत इवॉल्व करते हैं और इनकी कहानी का भी ये छोटा एक हिस्सा है. लेकिन इनकी शख्सियत और इनकी पर्सनालिटी का कुछ पर्सनल एस्पेक्ट ऐसा है which really added value to honing and shaping her into the professional that she is today. With at one time absolutely no experience and background in accounting or finance, she ended up being hired as the first female in the finance accounts department in the South Division of Contour Software. Ladies and gentlemen, I am absolutely delighted to introduce to you Sidra Athar. Sidra, welcome to the hot seat. Thank you for having me. I'm very delighted that you're here today. As always, you've got so much positive energy, and I hope we're going to have a great conversation. अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइए कि आप जब अपने बारे में सोचती हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोचती हैं, and if you go back a little bit to the personal aspect of it, when you didn't start working, what kind of a person do you evaluate yourself to be? Are you the kind of person who likes nurturing and taking care of people? And has that in any way played an important role in who you are today as a professional? Absolutely, yes, because I am the eldest among my siblings. So Okay. you can say it has been inherited in me from an early age because आपके छोटे बहन भाई होते हैं and then you actually take care of them being the eldest. And I started working at a very young age just to support my father and my family and my siblings. So that leadership and taking charge of things, qualities got embedded in me back then. And that's how I ended up being kind of a leader, taking care and providing people with a nurturing and warm environment so that they feel comfortable working and they feel welcome to come to me and like मुझे अपने कोई भी कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं वो they can come to me and discuss it with me openly. That's Right. one of the part. Very rightly you put forward that leadership qualities इंसान की घर से ही शुरुआत हो जाती हैं क्योंकि आप eldest थी and you wanted to take care of your younger siblings and you wanted to also extend support as you rightly said. बेहतरीन बात. You said you started working at a young age. That sense of awareness जो है वो हर एक में नहीं होती है unless एक सिचुएशन ऐसी बन जाए, डिमांड ऐसी हो लाइफ की. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को पुश करता है क्योंकि इंसान कहता है कि अच्छा मैं खुद ही कर लूं इससे पहले कि कोई मुझे कहे. इनमें से कौन सा था आपके लिए? वाज इट दैट खुद अवेयरनेस आई थी या हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे? Both things were there. मैं हमेशा अपने फादर को देखती थी, वो बेचारे ऑफिस से आते थे, बहुत थके हुए होते थे. वी वुड गो टू हिम एंड टॉक टू हिम, आपका दिन कैसा रहा, वील टेक हिज स्टफ अवे. जो एक बच्चों को घर में हमारे पेरेंट्स वो करते हैं, तरीका सिखाते हैं कि कैसे जो बड़ा घर में आए तो कैसे उनको पानी देना है, उनकी चीज़ें लेनी है. वी बिल्कुल. वुड यूज टू डू दैट. he will not complain about anything कि मैं बहुत थक गया, आज मेरे टांगों में दर्द हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है, but he'll be very strong in front of us, right? So that was the thing that kicked in. And then after a while मुझे जब थोड़ी realization हुई कि I should start searching for a job. Unfortunately my father actually lost his job. Okay. So that was one of a bigger push for me कि मैंने कहा नहीं, I need to work और ज़्यादा जल्दी. And I started looking immediately for jobs. और मेरे father, he would drive me on his motorbike to all the places where I wanted to drop off my CV. The struggle, he was with me through and through. Right. Right? So we would go to different places, drop in my CVs. If I get an interview call, वहाँ भी वो मेरे साथ जाते थे. He would sit there literally until I finish my interview. Right. And final process में he would sit there with me.
So that was the one thing that actually pushed me also and motivated me. Ke, yaar, yes, this is the time. It doesn't matter you're 16 or 17. It doesn't matter. You are there as an eldest sibling of your family. So yes, let's start taking care of people because they have been taking care of you for a very long time. Sidra, thank you for sharing such a personal and such an intimate aspect of your life. It's definitely going to be relatable to a lot of people because पाकिस्तानी हमारा जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह के हालात हैं जिसमें बहुत सारी प्रोग्रेस भी हो रही है बट डिमांडिंग टाइम्स हैं तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं ऑल ऑफ अस बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज वेयर इस तरह के किरदार अदा करने पड़ते हैं सो वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कॉन्टूर सॉफ्टवेयर द डोर्स ओपनड फॉर यू बिकॉज दे वर मेंट टू ओपन फॉर यू एंड आई एम श्योर बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है लेकिन इस मेमोरेबल जर्नी की जो शुरुआत थी पहला कदम था नौकरी का कैसे पता चला अप्लाई कैसे किया एंड देन हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट ज़रा बताइए Okay, so that is one of the most exciting portion of my life. So Okay. मैं जब भी explain करती हूँ ना तो I feel very like excited and Okay. I feel happy because that was the best decision I made coming to Contour. Okay. So currently I was working as an educationist, you can say, in all the reputed institutes of Karachi. But then one of my friends suggested, hey, like this is one of the openings. Are you looking to work in your career job? At that time, I recently started my MPhil as well in finance. Okay. So I was quite intrigued. I was like, okay, let's start अपनी journey start करते हैं. Career wise भी एक हमारा अच्छा scope बन जाएगा if I get this job, right? So my friend sent me the link. फिर जो है मैंने उस पर apply किया and applied after, I guess, actually within an hour I got the call. Wow. So and I was like, they asked me like if I can come in for an interview like tomorrow or day tomorrow. I was like, yeah, tomorrow works for me. And Yeah. I came in for the interview tomorrow, like the very next day. Mm-hmm. तो इंटरव्यू हुआ HR के सारे प्रोसेसेस हुए. I got interviewed by onshore managers, offshore as well. So I was just like about to leave and then one of the HR guy, he comes in and he's like, hey, can you stay for a few minutes more? I want to have your final interview on the same day. And I go like, yeah, sure, no worries. I was like very flexible about it. So they were like, sure. And they set up like a final interview with the onshore manager who I was supposed to report. So wo bhi interview ho gaya foreign. Okay. And then I left and I was very happy. I was like, hey, I did good. I hope that it works out because the company, the environment, because I just sat there for that interview, but I could feel the vibe on the floor. Like kitna positive vibe hai. I could see everyone working very happily, like ek dusre se mazak bhi kar rahe hain, and it's very nice and open culture. And I was expecting, I was praying in my heart कि यार बस यहाँ job हो जाए, it would be like the best dream come true वाला situation for me. And the dream did come true? Yes, indeed it did. After 2 days, I got a call that we are about to make you an offer. So let us know. What do you think about it? And then as soon as I got it, I accepted immediately because I was so looking forward to working at Contour. All right, wonderful. कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान उम्मीद तो कर रहा होता है लेकिन थोड़ा एंक्शस भी हो रहा होता है. Were you anxious at that point? Because as you said very candidly, you were looking for a good job also. So अगर let's assume कि अगर ना होता, what would you have felt at that time? अगर ना होता तो I would have been a little disappointed because I'm a person who keeps like a very positive energy throughout. Right. Even with the setbacks. But I would have kept an eye on Contours, different openings as well. Like later on, kabhi zindagi mein, I would be a fit for some role, right? There is some role made for me as well. So, मैं definitely यही करती कि I would have kept my eyes on the careers page of Contour, which most of the people should do. Now that's a true love story that you would have kept your eyes on the careers page of Contour Software. Now let's move on to the next phase of how your journey, not just started off, but how it progressed. You were telling me earlier कि आप खुद तो मेहनती हैं और आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे लोग और उनका साथ यहाँ पे मिला और इस तरह की स्पेसिफिक गाइडेंस मिली which really helped you become into a accounting finance specific professional. So let's talk about that. So the biggest aspect of this particular job opening was that there was no female on the floor. It was 50 plus guys
floor, on which I was the first female ever hired in finance, because 2011 से लेकर 2019 जब तक मैं hire हुई उस वक्त तक there was no female on the floor. Okay. So because जब उन्होंने मेरा interview लिया था, they told me about it, like they have been working in a pure guys environment. So you will be the first one starting the change. Right. So you should we expect a lot of things from you. And with that energy, like people are counting on me, rather than being anxious or being confused about things, I was very positive that hopefully I will be able to make a change here in the environment. Or जैसे ही I was invited on the floor after all the HR and IT training sessions, I was on the floor and I gazed upon मैंने पूरा floor पे देखा and I was like, okay, there's so many guys. I took a deep breath, and the people who were onboarding me on the floor and making sure that I was introduced to everyone on the floor. Right. They were like looking at me all confused, like, hey, are you okay? I'm like, no, I'm fine. I'm just loving the vibe on the floor. Is this a totally different vibe I felt on the other floor? And this is the different vibe on this floor. Right. So I'm loving it and I'm absorbing it at the moment. And then I'll accordingly react to the situation. Right. And they started laughing then and there. They're like, you are actually a good fit for us. And you'll see that you'll grow over here. Wonderful. So as I said, the second part of the question, that there were people who, as you just mentioned also, made you feel very comfortable, and then you were sensing and absorbing the vibe in the beginning. The guidelines that were given to you, which have also helped you move a step up every year, as you were very proudly mentioning. What were those guidelines that are different from what other work environments, generally promote? And how did they particularly hone you into an area-specific professional? So mostly it is said that you are supposed to have all the technical knowledges. Whenever you see a job opening, they mention that, hey, you should have this particular skill set, or you should have this degree. Over here, I felt all that matters, to be honest. Everything matters. But as long as you are willing to learn, you are willing to accept the change, there are numerous opportunities. Okay. Right? So मैंने इसी तरीके से अपने आप को ग्रो के लिए अपना एक होता है ना कि आपने एक विजन बना लिया होता है. मैंने अपना विजन बना लिया था, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन और मैंने आगे ग्रो करना है इसमें. तो वो मैंने अपने स्टेप्स फर्स्ट लिटरली ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने डिज़ाइन कर लिए थे कि ओके, इन अ नियर फ्यूचर आई विल बी सिटिंग somewhere where I am helping people or like managing people kind of role in my mind. Moving on to the fact that how people have helped me over here has, I can say कि इतना immense support मैं explain नहीं कर सकती word में. And literally every time I see all the people on the floor and I tell them like whatever I am today is because of your support, your constant guidance, right? Policies, procedures are already there intact. Well, हमारे पास हमें जब हम on board होते हैं उस वक्त ही दे दिए जाते हैं कि you have to follow these particular guidelines. These are the instructions for working with the softwares, right? So वो तो हमें सब given होता है. There were training sessions for my own job as well, because ये job एक one of a kind create की गई थी just for the sake of having a female on floor. Okay. तो उसके लिए different kind of trainings के go through हुई. मैंने काफ़ी trainings के साथ उनको आगे बढ़ी और बहुत सारे different professionals के साथ मैंने काम किया. Either they were onshore, they were offshore. Right. उन सब के साथ मिलके मैंने बहुत सारे different business units के अंदर work किया. उनके पूरी guidelines set की, हमने documentations की, उनके processes को define किया. So Wonderful. It has been like a very rewarding experience so far, in simple words. Sitra, you have a very good aesthetic sense. You're fond of a lot of things, which a lot of females are also fond of, including makeup, great colors, a good lifestyle, etc. So, assume नहीं कर रही हूँ, लेकिन generally एक tendency होती है that people who are aesthetically inclined may want to choose a field or a career which, is in line with that. Not necessarily though. आपने तो बिल्कुल ही opposite एक दिशा जो है वो अपनाई है, and that is accounts, which is honestly speaking a little dry and काफी sober. तो hair dry इतना या हमें ही सिर्फ लगता है कि it's a very serious sober dry field? I agree.
वाकई नंबर्स एंड अकाउंट्स की जब बात आती है लोग कहते हैं यार ये तो इतना ड्राई सब्जेक्ट है, तुम इधर क्या कर रही हो, राइट? तो देवर लाइक कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से फिट नहीं करता, यू आर वेरी लुकिंग में देखने वाइज प्लीजिंग है, थोड़ा एस्थेटिक लुक्स भी है, शौक है चीज़ों का, तो तुम्हें तो अकाउंट्स की बजाय मार्केटिंग में होना चाहिए था, या तो HR में होती तुम। तो मैंने बोला कि ये एक लव स्टोरी है मेरी और नंबर्स की। ओके। तो जब मैंने इंटरमीडिएट किया था BS कंप्यूटर साइंसेस में, तो अच्छा। मेरा फोकस था उस वक्त कि मैं BSc या डेटा एनालिटिक्स इस तरफ जाऊंगी। ओके। बट होता ये कि जब आपके पेरेंट्स आपका करियर डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट और भी ऑप्शंस ला के आपके सामने रखते हैं। तो मेरे पास किसी ने मुझे BBA की जो है वो एक बुकलेट ला के दी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट्स क्या है, डिटेल्स क्या है सब्जेक्ट्स की। आई वॉज गोइंग थ्रू इट। जब मैंने उसके अंदर देखा कि नंबर्स के इतने एनालिसिस है, नंबर्स से ये भी कर सकते हैं नंबर्स, मैंने बोला आई वांट टू गो फॉर BBA। ओके। तो मैंने जो है वो स्विच किया कंप्यूटर साइंसेस से BBA की तरफ। ओके। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय BBA फिर मैंने जो है वो MBA में एडमिशन लिया एंड देन MPhil में एडमिशन लिया। कॉन्टोर की अपॉर्चुनिटी इत्तेफाक से जब मैं MPhil के बिल्कुल वेरी लास्ट सेमेस्टर्स में थी उस वक्त ही Okay. आई थी मेरे पास। तो Okay. आई वाज एबल टू एक्चुअली अपनी स्टडीज़ को अपने एक्चुअल लाइफ उसमें प्रैक्टिस करने में आई वाज लविंग द फैक्ट कि यार यस आई एम प्लेइंग विद नंबर्स, इट्स वेरी चैलेंजिंग भी एंड enjoying फॉर मी, यू कैन से दैट। So you were able to translate what you were developing a passion towards in the actual workplace, which is fantastic. I'm very happy to hear that. अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी होती हैं, कुछ चीज़ें लाइफ चेंजिंग होती हैं. At Contour, there's so many wonderful memories that you've made, and I'm sure there'll be many more that you're going to make. कोई एक ऐसा particular incident या event which really brought tears of joy to you, which you will always cherish, जो कि Contour में at the workplace हुआ था? One of the most exciting and heart-touching experience of my life was when my manager nominated me to actually take charge on a training, because he Wow. knew कि मेरा background थोड़ा teaching से related था, and I Right. was, according to him, he said कि तुम बहुत अच्छे से explain करती हो। तो बेसिकली मैंने अपने मैनेजर को ऑन बोर्ड किया था। तो ही वाज वेरी एवरी टाइम ही वुड टॉक टू एनीवन ही वुड बी लाइक इफ सिद्रा वाज़न्ट हियर आई वुड नॉट हैव फिगर्ड दिस ऑल आउट। Okay. शी हैज़ बीन सच अ गुड मेंटोर और लाइक शी हैज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी सो वेल कि मैं एक बहुत अच्छा मैनेजर में डेवलप हो गया। Wow. दैट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑफ माई लाइफ। उसने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं, उस कॉम्प्लीमेंट को मेरे इस पैशन को आगे फर्दर वो करने के लिए ही सेड दैट एक ट्रेनिंग करवानी है जिसमें सिद्रा वुड बी द ट्रेनर और Okay. वो लीड करेगी उस ट्रेनिंग को। Okay. एंड ही वुड बी ऑन माई साइड सपोर्ट। माई मैनेजर सेड आई वुड बी ऑन योर साइड सपोर्ट, आई वॉन्ट यू टू लीड दैट ट्रेनिंग। And it was with all the people, finance people, onshore, offshore, everyone was there on the Okay. meeting. Even our CFO was there. Okay. Yes. I was pretty nervous, but I was so excited कि ये something ऐसी है जिसके अंदर मैं already I am like very comfortable कि किसी को कुछ सिखाना हो, समझाना हो, I am very on to it कि हाँ चलो, I will. So that time was that's the memory I cherish and I'll keep cherishing for the rest of my life कि I got this compliment और compliment मिलने के साथ साथ I got the opportunity to actually show off or like showcase my passion of teaching into my own career as well. That was one of the incidents. That's a beautiful story, and I'm sure it also, inspired you to carry forward the same kind of legacy, that when you see that somebody has a certain kind of potential, you will make sure कि आप उसको highlight करें, because you have gone through it and you know कि कितना अच्छा महसूस होता है. No doubt, इंसान अपना careers को अगर switch भी करता है, लेकिन अगर एक particular area of, expertise है या potential है या interest है, और कोई उसको help कर दे कि उसको इंसान और डेवलप कर सके, तो क्या ही बात होती है. अच्छा, यू आर अ वेरी positive person, but you're also a person who seems very aware. You can definitely tell what's happening around you. You seem like a very observant person. तो जो आपकी स्वीटनेस और नाइसनेस है, जिसकी वजह से आप मशहूर भी हैं कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हैं and people like working with you. Have you ever felt, not at Contour necessarily, have you ever felt that there are people who will sometimes take advantage of a person's niceness,
Whether the answer is yes or no, उसको आगे थोड़ा explain कीजिएगा कि आप कैसे deal करती हैं. You can say at times yes कि होता है जब आप बहुत ज़्यादा nicely और politely लोगों से बात करते हो, they try to like कहते हैं ना कि leeway लेने की कोशिश करते हैं कि यार चलो थोड़ा सा रास्ता दे दो, मैं we'll कर लेंगे देख लेंगे कर लेंगे. There were times in my life कि जहाँ पे ऐसा हुआ लोगों के साथ. बहुत बेसिक एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की ले लो, ठीक है, दे नो यार सिद्रा अच्छी बंदी है, नाइस है, कुछ नहीं कहेगी, कर लेते हैं, छोड़ो. यूनिवर्सिटी की हमने मीटिंग रखी हुई है कि हाँ यार प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, ड्यूटीज डिफाइन करनी है कि कौन क्या क्या करेगा. अरे यार सिद्रा, अब यार वो तो इतनी नाइस, कर लेंगे, उसके साथ क्या मसला है, वो तो चिल बंदी है. तो when people start doing this तो मैं थोड़ा सा अपना एक कहते हैं कि टीचर मोड ऑन कर लेती हूँ. Okay. एंड आई गेट इनटू द फैक्ट कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये आपको ही करना होगा. कि यार देखो, हमें सबको इक्वली अपने प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलने वाले हैं. Right. तो लेट्स ऑल ट्राई टू पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स इक्वली, कि कहीं किसी को ये ना फील हो. क्योंकि टीचर्स मोस्टली पता होता था कि सिद्रा का ग्रुप है ना, तो मेजॉरिटी काम सिद्रा, वो प्रेजेंटेशन शुरू हो रही, सिद्रा आप साइड में हो जाओ. Because they're able to see through it. So that was your first awakening कि ऐसा भी होता है. एग्जैक्टली. Okay. फॉर देयर सेक मैं ये करती थी कि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे टीचर इज गोइंग टू कॉल मी आउट कि तुम हट जाओ और तुम लोग पे, तो आई वॉन्ट यू टू वर्क फॉर योर सेल्फ. क्योंकि मुझे सिर्फ अपने नंबर्स की फिक्र नहीं, मुझे उनकी भी फिक्र होती थी कि ऑब्वियसली हम एक ग्रुप है. ये मेरा हमेशा से रहा है, हम जब भी कोई काम करो मुझे अपने साथ साथ ऑब्वियसली बंदे को अपनी फिक्र करनी चाहिए. दैट्स माई थिंग. अच्छा हो जो भी हो, अपनी फिक्र करनी चाहिए. लेकिन दूसरों की भी करते हुए एक माहौल बनाना, ये चीज़ मैंने कैरी ऑन की कॉन्टोर में भी. जब मैं कॉन्टोर में भी आई, मैंने भी ये चीज़ कैरी ऑन की कि जब भी कोई हमारे ट्रेनिंग्स हो रही हैं या हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वील मेक श्योर कि एवरीवन इज़ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उन लोग को आइडिया है कि व्हाट टू एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उनसे क्या चाह रही हूँ मैं. आई विल बी वेरी क्लियर विद माई इंस्ट्रक्शंस विद देम. Right. Okay. So very, very spot on. And thank you for sharing that, because बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी females हैं who will be watching this along with young men also. And I think men or women, people who are young, have a tendency to be nice, maybe a little naive. तो उसको juggle करना, balance करना एक art है और आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है. Very relatable example that you gave of university days, कि वहीं पे इंसान को अपने आप को थोड़ा सा होन करना चाहिए ताकि आगे जाके जिंदगी में मसले मसाइल ना आए. बेहतरीन बात हो गई. ट्रैवलिंग का शौक है आपको? आई लव ट्रैवलिंग. अच्छा, तो क्या क्या ख्वाब हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहती हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे का ख्वाब होता है कि टर्की जरूर घूम के आए. सही, इट्स अ वेरी कॉमन टैगलाइन. मैं भी यही बोलूंगी, लेकिन आई वांट टू गो देयर बिकॉज ऑफ जितना सुना है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज, और एंड इट इज प्रीटी क्लोज. और थोड़ा सा शायद थोड़े टाइम बाद सेविंग करके अफोर्डेबिलिटी भी बन जाए इंशाल्लाह. तो जो है वहाँ एक मेरा है कि आई वांट टू डेफिनेटली गो देयर. एंड देन आई इवन वांट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान एज वेल. पाकिस्तान की जो और नॉर्दर्न साइड है, आई हैव बीन ऑन वन टूर which was very short one, but it was a very good tour. But we couldn't go to other areas. So I want to explore Pakistan as well. But one of my like dream designation is Turkey. I want to go there. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया. खाने पीने की शौकीन है? I love food. Eating या cooking? More eating rather than cooking. But I love when it comes to cooking, my siblings are like, okay, pasta, ramens, ये सारी चीज़ें सिद्रा ही बनाएंगी. अच्छा, okay. No one else is gonna make it because she makes the best. Interesting. And that's something that I think a lot of elder siblings के ऊपर एक responsibility automatically आ ही जाती है, because there's other people to take care of. सिद्रा, एक वक्त था कि काफ़ी difference consider किया जाता था between what was being taught in universities and schools and what was expected or required in the corporate environment. फिर वक्त के साथ साथ चूँकि ये बहुत तवील अरसे तक ये गैप जो है वो नोटिस किया गया, तो slowly and gradually changes आना शुरू हुए. When you were studying and when you were in your higher education towards your BBA and then towards your MPhil also, I'm guessing that things would have gotten better by that time. So do you feel that there was any difference between what you studied
and what you had to practically apply when you started working in corporate? विद द पैसेज ऑफ टाइम वाकई इस पे बहुत अच्छा वर्क किया गया कि करिकुलम और एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक सा रह गया है. Okay. मिनिमलिस्टिक इन अ सेंस कि आप ये कह सकते हो कि बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है, Hmm. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है. Hmm. लेकिन सिंस आई एम प्योरली इन फाइनेंस एंड ऑल लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी बीबीए के अंदर एंड वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट, Right. तो मुझे इतना कोई ऐसा मेजर डिफरेंस कहीं नहीं फील हुआ और ना ही ऐसा लगा कि नहीं यार जो मैंने पढ़ा था ये तो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ मैं कर रही हूँ प्रैक्टिकली. नो, एवरीथिंग वॉज इन लाइन. अक्सर मैं ये बात बोलती थी कि आई हैड द बुक नॉलेज, आई जस्ट नीड टू डू इट. Right. जब भी कोई मुझे कुछ सिखाने के लिए या कोई ट्रेनिंग की बात होती थी, आई वुड रिपीट द सेम सेंटेंस कि मेरे पास नॉलेज है, सिर्फ मुझे तरीका बताए कि हाउ कैन आई गेट इट इनटू एक्शन. बिकॉज पाकिस्तान में फैमिली का रोल जो है वो बहुत अहम होता है. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट्स हु वी आर. तो फैमिली का इन्फ्लुएंस पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस पे भी होता है. हर दौर में ये भी होता है कि डिफ़ाइन किया जाता है, ख्वाहिशात होती हैं वालिदैन की कि उनकी औलाद जो है या तो कोई सर्टन चीज़ पढ़े या सर्टन किस्म की नौकरी करे. वक्त के साथ साथ वो भी इवॉल्व हुआ है बिकॉज अब ज़रूरत पड़ गई है कि एक ही घर के बहुत सारे अफराद जॉब करें, काम करें. लेकिन अभी भी आई फील दैट इस तरह का हमारा माहौल है या इस तरह का हमारा कल्चर है सो कॉल्ड, जिसमें अगर सपोर्टिव पेरेंट्स हैं भी तो और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना ओपिनियन अक्सर दे देते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू लिमिट इट टू फीमेल और मेल ओनली, इट कुड हैपन विद एनीवन. लेकिन फीमेल्स जनरली are told that they should not maybe be pursuing a certain kind of career or working in a daftar, etc. सुना है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था. होता है ना कि जब आप अपने घर में, मेरे साथ एक इत्तेफाक ये है कि मैं अपने जो है मदर साइड पे जो हूँ सबसे बड़ी हूँ. Okay. तो अब जब बड़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें आई. एक काम करते हैं, सिद्रा को डॉक्टर बनाएंगे. एक टाइम था कि हम इस पाथ पे Right. चल रहे थे कि सिद्रा को डॉक्टर बनाएंगे. Right. विद पैसेज ऑफ टाइम मेरे पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि मेरी इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा है. तो उन्होंने बोला नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि करियर वाइज ये कहाँ पे अपने आप को इंक्लाइंड फील करती है. दे सॉ मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ, तो उन्होंने तभी मेरे मैथ को अच्छा रखते हुए मेरे फादर ने मुझे बीबीए की वो बुकलेट ला के भी दी थी. Right. क्योंकि ही न्यू कि मेरा नंबर्स से कितना इंटरेस्ट है. कभी वो ऑफिस का भी कुछ अपना काम लेके आते थे ना, तो ही वुड से कि तुम देखो तुम्हें कुछ समझ आता है इससे, तो मैं उनको बताती थी अब्बू ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कम है, ये ज़्यादा है. तो वो काफ़ी हैरत से देखते थे. वो कहते थे इतनी मतलब 6, 7, 8 की बात है आई गेस. तो वो ये देखते थे कि इंटरेस्ट लेती है चीज़ों के अंदर. Right. तो ये चीज़ को माइंड में रखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मेरे इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और ये कोशिश की कि मार्केट कंपैटिटिव चीज़ें भी करती रहूँ साथ साथ. तो व्हेन आई स्टार्टेड बीबीए, तो मेरे पेरेंट्स ने, माय मदर गॉट मी इनटू इन एन एक्सेल ट्रेनिंग कि हाँ नहीं तुम ट्रेनिंग पे जाओ. उसके Okay. बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें. मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ साथ हर चीज़ पे सपोर्ट किया. दैट इज़ अ नोन फैक्ट कि पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं ना तो आप बहुत कुछ कर भी लेते हैं. बिल्कुल सही बात. अब बात आई कॉन्टूर में जॉब करने की. Right. तो अब पता ये चला, पहले तो ओके ओ वाह कॉन्टूर में जॉब हुई, मुबारक हो. हाँ. अच्छा, और कब जाती हो कब आती हो? मैं तो दोपहर में जाती हूँ और रात में आती हूँ. अरे इतनी देर तक बाहर रहती हो घर से, रात के 11 बजे घर में आओगी. ओ गॉड, ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है भाई. ये तो Said the people who don't really matter. एग्जैक्टली. तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है ना. Right. मेरे अब्बा सुने, मैंने लेना है, मैंने छोड़ना है. तो चाहे वो रात के 11 बजे आए, 12 बजे आए, मैं तो अपनी बच्ची को लेने जाऊंगा. तो जहाँ मैं एक डाउन फील करी थी कि यार लोगों को देखो माशाल्लाह मैंने इतनी अच्छी जगह आ गई, मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ. बीइंग स्पेशली अपनी ख़ानदान में वो होने की वजह से फीमेल होके आगे जाने, तो ये कैसी बात कर रहे हैं यार, एकदम वियर्ड लग रहा था मुझे. और मैं थोड़ा सा सैड भी फील कर रही थी. लेकिन मेरे अब्बा ने जब ये बोला ना कि भाई मैंने ही उसे लेना है और मैंने ही छोड़ना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो वो मैंने सेंटेंस उनके लिटरली वो दिखाते नहीं है कार्टून्स के अंदर के स्पार्क आ जाते हैं आँख के अंदर. वो एक स्पार्क आया मेरे आँख के अंदर. मैंने बोला यस, जब ये लोग मेरे साथ है ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है. दैट्स सो ट्रू. एंड इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं दरख्वास्त करूँगी उन तमाम पेरेंट्स से जिनको
बिल्कुल वजह है कि उनको झिझक थोड़ी सी होती है अपने यंग बच्चों को बाहर की दुनिया में भेजते हुए, लेकिन याद रखिए दैट दे हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड इफ़ यू सपोर्ट देम एंड इफ़ यू ट्रस्ट देम, तो लोगों का काम तो होता ही है बातें करना। कल को वो इतना अच्छा काम करेंगे और इतने काबिल बन जाएंगे कि ना सिर्फ आपको फ़ख्र होगा, लेकिन जितनी बोलने वाली बातें और आंखें थीं वो भी खामोश हो ही जाएंगी। सिद्रा, मज़ा तो बहुत आ रहा है, बातें 1 घंटा और हमारी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें वाइंड अप भी करना है। लेकिन वाइंड अप करने से पहले आई डेफिनेटली वांट टू नो फ्रॉम यू वन क्वेश्चन, 2 पार्ट्स। सबसे पहले ये कि आपकी जर्नी जो है वो कुछ प्लान्ड और अनप्लान्ड रही है, लेकिन डेफिनेटली एक पाथ की तरफ चल पड़ी है। तो आई वुड बी गेसिंग दैट यू डू हैव सर्टन गोल्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो पहले कुछ 2-3 पर्सनल गोल्स बताइए आपके कि अगले 2-3 साल में आप क्या करना चाहती हैं, एंड देन 2-3 कुछ प्रोफेशनल गोल्स। One of the goal I have set for myself for this year is I want to have my own car. जबरदस्त। ठीक है, that's like the biggest goal I have for this year. I hope this year वो पूरा हो जाए. Otherwise next year में भी चला जाता है तो I trust all the timings के कोई मसला नहीं है. लेकिन I'm opting for this year कि yes, this year I'll get my own car. Okay. One of the thing is that. And secondly, I do want to travel a little bit more. तो traveling थोड़ी बढ़ाना चाहती हूँ मैं इस दफ़ा, because due to after COVID era actually हमारा इतना ज़्यादा कोई ट्रैवलिंग का रुझान रहा नहीं है ना, तो मैंने ये सोचा है कि यस, मैं अब अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के जस्ट फॉर लाइक रिलैक्सिंग पर्पसेस आई वांट टू गो एंड ट्रैवल, और थोड़ा सा अपने लिए टाइम एक्स्ट्रा निकाल के वहाँ पे 2 चीज़ें मुझे करनी है, एक अपनी गाड़ी लेनी है और एक अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम देके एंजॉय भी करना है। ओके, तो ये तो हो गए पर्सनल गोल्स। प्रोफेशनल गोल्स के लिए हैव यू सेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ और समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन? हाँ, यू कैन से दैट द व्हील्स आर इन मोशन। ओके। तो प्रीवियसली मैं एक सर्टेन फाइनेंस के एरिया पे काम कर रही थी, राइट। लेकिन मैंने थोड़ा इंटरेस्ट शो किया कि मुझे और थोड़ा सा आई एम लुकिंग टूवर्ड्स अ ब्रॉडर फाइनेंस एक्सपेक्ट्स। तो उधर मुझे यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इंटरेस्ट शो करो ना और अपनी विलिंगनेस शो करो कॉन्टोर की, लोग आपके लिए एवेन्यूज़ खोल देते हैं। और वही हुआ, मैंने इंटरेस्ट शो किया, मेरे लिए एवेन्यूज़ खोल दिए गए। उन्होंने बोला ये भी कर लो, तुम ये भी कर सकती हो, यू कैन डू फाइनेंशियल एनालिसिस, यू कैन डू पूरा बिजनेस यूनिट का वर्क भी कर सकती हो। तो यू कैन से कि मैंने व्हील्स जो हैं वो इन मोशन है ऑलरेडी। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर और 2 years डाउन द रोड यू विल बी लुकिंग एट लाइक एट अ फुल फ्लेज फाइनेंस प्रोफेशनल person. So that is like my professional goal at the moment, which is I'm already working on it currently. I'm absolutely delighted that you and I had an opportunity to sit down, to talk, to chit chat, almost like friends. Thank you so much for opening up, for your energy, for your warmth, and for your candidness. Thank you so much for having me. It was a pleasure meeting you and having this conversation with you. Ladies and gentlemen, that's it for today from the studios of Contourcast Podcast for Life. We hope you had a wonderful time viewing this episode, just like you've had a wonderful time viewing all the previous episodes. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you and Allah Hafiz.